Hello everyone, मैं BL Sharma, Math sir, and this is how to find out the square roots of the decimal numbers. मैं BL Sharma Math sir हूँ और इस क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। This is class for finding the square roots of decimal numbers, and this is by BL Sharma, means by me. Very important, especially this is for 8th class, but very important for class 9th and 10th also. And this is how to find out the square root of decimal numbers. Consider square roots of decimals, and here we are considering one question, that is to find out square root of 17.64. ये 17 point, sorry, this is 64. I have to change it. Hello everyone, मैं BL Sharma, Maths sir, discussing squares and square roots. Especially in this class, I'll be discussing with you how to find out the square root of decimal numbers. Squares and square roots, especially in this class, I'm taking square root of decimal numbers, and this is of class 8, but very important for class 9th and 10th also, and this is me, BL Sharma. Square roots of decimals, and here is the question, find square root of 17.64. देखिए ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल के जो ये प्रीवियस पार्ट है ये इंटीजर नंबर है, इसलिए इसको हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और डेसिमल की बात 64 है। हम क्या करेंगे इसमें कि पहले जैसे हम लिखते आए थे फॉर द अदर क्वेश्चंस, वी राइट हियर 17.64। हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल पार्ट से, यहां से पेयर बनाएंगे और डेसिमल के बाद में जो नंबर है उसका भी हम पेयर बनाएंगे। नाउ वी कंसीडर दिस पेयर, दिस 17, वी टेक अ नंबर, हम ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 17 हो या 17 से कम हो। दैट इज वी नो 4 स्क्वायर इज 16, सो राइट हियर 4, राइट हियर ऑल्सो 4, 4 4 जा 16. Subtract here 17 minus 16, that is 1, and this decimal part as it is. लेकिन अब आपको यहाँ पे डेसिमल पुट करने की जरूरत नहीं है। As usual we know that we write here, यहाँ पे जो हम नंबर लिखते हैं इस 4 का डबल लिखते हैं, so this number is 4, it's right, it's double number here, and it's double, the double of 4 is 8. अब ये है कि यहाँ पे क्या नंबर लिखा जाए। यस, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, सो दैट सी हियर, देखिए इट इज 8 हियर, सो यू राइट हियर 1 एंड मल्टीप्लाई 1 बाय 1, दैट इज 81। वी नीड 164। इफ आई टेक 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 4 4 जा 16 and 8 4 जा 32 और ये 37। क्या नंबर होना चाहिए? देखिए ये ज्यादा हो गया। यू राइट हियर 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। यस, सो हियर इट शुड बी, ये नंबर यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ भी आप 2 लिखिए, एंड 82 into 2, दैट इज 164। या ध्यान देने की बात यह है कि अगर देखिए सी हियर, ये जो आपका पार्ट है ये डेसिमल पार्ट है, इसलिए कोसेंट में आपको यहाँ डेसिमल यूज करना, पुट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट हियर, द रिमाइंडर इज 0, सो वी कैन से दैट square root of 17.64
17.64 दैट इज 4.2 आंसर। फिर से देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो डेसिमल, ये डेसिमल पार्ट है यहां से, तो यहाँ जस्ट आफ्टर 4 यू हैव टू पुट डेसिमल। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। देखिए दिस नंबर इज डेसिमल नंबर, तो हम क्या करते हैं कि इस नंबर को यहाँ पे हम पुट करेंगे। दिस नंबर इज 12.25। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जो डेसिमल पार्ट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमने एक पार्ट बनाया और उसके ऊपर बार का साइन पुट किया, और डेसिमल के बाद में जो भी नंबर है उसके ऊपर हमने एक बार का साइन लगा दिया है। नाउ वी हैव टू कंसीडर दिस नंबर, कि ये जो नंबर आपके पास है ये वाला दिस नंबर मीन्स ये जो नंबर है इसके ऊपर बार का साइन है। हमें ये जो नंबर है कि इसके लिए हमें वो नंबर देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 12 आए या लेस देन 12 आए। देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा दैट नंबर विल बी 3। सो यू राइट हियर 3, and if you write here 3 the same number should be written here, so you write here 3, and this is 3 3 is 9, so you write here 9। subtract करिए 12 minus 9 that is 3, and this 2 5 as it is, so this is 3 2 5। देखिए 12 में से 9 subtract करेंगे 3, और this 2 5 as it is। अब यहाँ पे आपको डेसिमल कोड नहीं करना है, लेकिन जो भी इसके बाद जो आंसर क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे आपको डेसिमल पुट करना है। देखिए एंड यू राइट हियर डबल ऑफ 3 दैट इज 6। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करिएगा कि ये जो नंबर है 325 आइए। देखिए इसके आखिरी में क्या है, दिस नंबर इज 5, सो कैन यू मल्टीप्लाई बाय 5। दिस नंबर इज 5 and this number is 5, so when you multiply this number by 5 you also multiply by 5। 5 5s are 25, 6 5s are 30, and 2 32। So you write here this number will be 32। This number will be 32, so I can remove this here। But ये जो नंबर 5 है यहाँ पे डेसिमल हमने पुट कर दिया, ये नंबर यहाँ आ जाना चाहिए। So this number is 5, and what is remainder? When you subtract the remainder is 0। सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट का साइन लगाए हैं, रिमाइंडर 0 आ गया। देखिए तो आई थिंक नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 दैट इज 3.5। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज 3.35 आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल now on your screen। Area of square of plot is given 2304 meter square। Find the side of the square। We know that when area of the square is given, then to find out the side of the square we have to take the square root of the area। यहाँ पे area of square है 2304, तो हमें यहाँ पे इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। दिस इज नॉट अ डेसिमल नंबर, सो वही द सेम प्रोसेस वी हैव टू डू फॉर दैट। ये पूरा नंबर यहाँ पे लिखिए 2304। देखिए ये 2304 मैंने लिखा है यहाँ पे, एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड यहाँ पे आप बार लगाना शुरू करिए, पेयर बनाइए। देखिए ये पेयर है और ये भी पेयर है। राइट हैंड साइड पे आपने बार लगाया है, और यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे अब आपको कंसीडर करना है ये 24। एक ऐसा नंबर सर्च करिए जिसका स्क्वायर या तो 23 हो और लेस देन 23 हो। हमें पता है कि द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड द स्क्वायर इज ऑफ 4 इज 16, सो हियर विल बी 4। तो यहाँ जो नंबर होगा वो नंबर होगा 4। यहाँ पे आप 4 पुट करिए। देखिए ये नंबर आपका 4 है। अब 4 यहाँ पे अगर आपने 4 पुट किया, यू पुट किया 4 ऑल्सो,
and 4 4s are 16. You put here 16 number. आप subtract करें 23 minus 16, that is 7, and this 04 as it is, so write here 704. ये जो नंबर 4 होता है उसका डबल हमें यहाँ लिखना है, मीन्स वी हैव टू राइट द डबल ऑफ 4 मीन्स ट्वाइस ऑफ 4 इज 8, सो राइट हियर 8. अब यहाँ पे ये जो नंबर 8 है, आप देखेंगे कि यहाँ पे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें. वैसे वी हैव डन सो मेनी मींस क्वेश्चंस. देखिए ये नंबर है 8. इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 1 देन 1, ये तो 81 ही रहा. पर अगर ये 8 है और यहाँ भी 8 से लिख दूं तो दैट नंबर विल बी 704. सो ये नंबर है, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए 8. And when you multiply this number by 8, you also write here multiply by 8. The number will be that number will be 704. Subtract कर दीजिए, and 704 and 704, the remainder is 0. And if it is 8, you write here 8 also. So this is 8. So square root of 2304 is 48. So the side of the square is 48. So now we can write here the answer, that is 48 meter. So the side of the square of the plot is square root of 2304, and that is 48. So this is the answer of the question, that the side of the square plot will be 48 meter. There are 2,401 students in a school. PT teacher wants them to stand in the rows and columns such that the number of rows is equal to the number of column. Find the number of rows. जितना rows हो उतना ही column हो. तो ये find out करने के लिए हमें we have to find out the square root of 2401. And you know how to find out the square root of 2401? और तो ऐसे आप इसका square root find out करिए. तो हमें 2401 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. एज यूजुअल आपको यहाँ पे यू राइट हियर द 2401. ये देखिए 2401 लिया और राइट मीन्स राइट साइड से देखिए ये नंबर डेसिमल नंबर नहीं है, इसलिए राइट साइड से आपको पेयर बनाना पड़ेगा. देखिए वन पेयर इज ऑफ 01 एंड अदर पेयर ऑफ दैट इज 04. ये 04 जो नंबर है उसका आपको पहले नंबर सर्च करना पड़ेगा. एक ऐसा नंबर सर्च करिए जिसका स्क्वायर या तो 24 हो और इधर इट इज लेस देन जस्ट लेस देन 24 हो. We know 4 4s are 16, 5 5s are 25. So this number will be 4. So write here 4. If you are writing here 4, you also write here 4. And 4 4s are 16, so you write here 16. Subtract करें 24 minus 16, that is 8, and 01 as it is, so that is 801. अब आपको पता है कि ये जो नंबर 4 यहाँ होता है इसका डबल यहाँ पे होता है. दिस नंबर इज 4, so its double will be 8. So write here 8. अब इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करें? तो वो नंबर आना चाहिए 801. Can you guess any number? Yes, it is 9. So when 89 is multiplied by 9, right here this number is 9 multiplied by 9. This number is equal to 801. Subtract करिए. If this number is 9, you have to write 9 here. This is 9. Subtracting 801 from 801, the remainder is 0. So what is the answer? So the answer will be 49. Answer will be 49. So we can say that the number of rows will be 49.
That's all for this question. Find the square root of the decimal number, that is 2.56. तो देखिए आप 2.56 यहाँ आप लिखिएगा, and then you draw a line, put we start putting the bar on the left hand side. जो इंटीजर पार्ट है, मीन्स जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड का पार्ट है, उस पे बार का साइन लगाइए। पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है, और डेसिमल पार्ट पे भी आप साइन, बार का साइन लगाइए। नाउ यू कंसिडर द नंबर दैट इज 2। ये जो आपके पास 2 नंबर है उसको कंसिडर करिए, और हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर आइदर इट इज 2 और लेस देन 2 हो। हमें पता है कि ये 1 ही नंबर है। 1 स्क्वायर इज 1, 2 square is 4. This 4 is greater than 2. So this you have to write here 1. यहाँ पे you put 1. If here it is 1, then you also put here 1. 1 1 जा 1. Subtract करिए, 2 minus 1 is 1. And this 5 6 as it is. यहाँ पे अब आपको डेसिमल you put नहीं करना है। ये जो भी नंबर है दैट नंबर 1, इसका डबल करके इधर लिख दीजिए। दिस नंबर इज 1, so its double is 2, so write here 2. Now अब जो भी, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में आंसर आएगा उसके पहले आप डेसिमल का यूज करिएगा। राइट हियर 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 21, दिस इज लेस देन 156। राइट हियर 4, 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96, ये भी कम है। तो क्या मैं कैन आई राइट हियर 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, and 8 to the 16 and 4 204, ये भी ज्यादा हो गया। It means right here 6 multiply by 6, 6 is the 36, 6 to the 12 and 3 15, yes. So write you here 6, यहाँ पे आप 6 लिखिएगा। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस नंबर इज 156। तो ये जो 6 नंबर लिखा, यहां भी आप 6 लिखिए, सब्ट्रैक्ट करिए। 156 माइनस 156 इज 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 is 1.6 आंसर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29, ये डेसिमल नंबर है। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे ये लिखा 7.29। डेसिमल के पहले जो इंटीजर पार्ट है उस पर पेयर बनाइए, नहीं तो बार का साइन पुट करिए, और डेसिमल के बाद में भी जो नंबर है उसका भी पेयर बनाइए और उस पर डेसिमल पुट कर दीजिए। पेयर नहीं बनता है राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, सो यू कैन राइट हियर 0। राइट। अब देखिए, हमें ये नंबर जो हम कंसिडर करते हैं वो ये करते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर लें जिसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज इधर 7 और लेस देन 7। ये जो नंबर होगा, हमें पता है कि 3 3 9, कैलकुलेट करें, 2 2 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9। दिस 9 बड़ा है 7 से, so you have to write here 2. If you write here 2, then you also write here 2, and 2 2s are 4, you write here 4 because 2 2s are 4. Subtract करिए, when you subtract 7 minus 4, that is 3, and this 2 9 as it is, but you here don't put sign of decimal. This number is 2, its double is 4, you put here 4. अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नंबर यहाँ आएगा उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, यू इफ यू राइट हियर 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49 एंड 7 4 जा 28, तो ये तो आपका नंबर कम हो गया, ज्यादा हो गया। तो इट शुड बी यस 7 4 जा 28 एंड
means 4, that is 32. Yes. So you write here 7 multiply by 7, this number is 232.9. बट क्योंकि ये आपका डेसिमल पार्ट है इसलिए कोसेंट में के पहले यहाँ पे डेसिमल पुट करिए और फिर ये 7 पुट करिए. सो वी कैन से that square root of 7.29 is 2.7 answer. Find square root of 51.84. This is decimal number. So इसके लिए देखिए पहले the same process we have to adopt here. यहाँ पे हमने लिखा देखिए that is 51.84. डेसिमल के पहले जो इंटीग्रल पार्ट है उस पे बार पुट करिए, पेयर बनाइए, और डेसिमल के बाद में जो नंबर है उस पे भी आप बार का साइन लगाइए, पेयर बनाइए. अब डेसिमल के पहले जो नंबर है दैट इंटीग्रल पार्ट है उस पे ऐसे नंबर आप सर्च करिए कि उसका जो द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर इज आइदर 51 और लेस देन 51 हो. कैन यू गेस एनी नंबर? यस, we can say that 6 into 6 that is 36, 7 into 7 is 49, then 8 into 8 that is 64. ये जो नंबर है because 64 is more than 51, so you write here 7. जो यहाँ पे नंबर लिखते हैं you also write here 7 and 7 7 जा 49. You subtract 51 minus 49 that is 2 and this 8 4 as it is, right? And here now you have to write here, यहाँ पे जो आपको नंबर लिखना है देखिए यहाँ पे इस 7 का डबल जो नंबर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा and the double of 7 that is 14. अब मैं मुझे यहाँ पे क्या नंबर लिखूं कि ये जो उसको मल्टीप्लाई करने से 284 या 284 से कम आए. देखिए आई एम राइटिंग ये 14, देन ये यू राइट हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ पे देखिए आप 2 लिखिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 284. सो राइट हियर 2 एंड सब्ट्रैक्ट हियर दैट इज 0. बट यहाँ पे एक चीज जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये रखनी पड़ेगी कि ये जो नंबर है दिस नंबर इज मींस डेसिमल पार्ट है. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो आएगा डेसिमल का. सो यू पुट हियर दैट इज 7.2. कीप इन माइंड therefore square root of 51.84 is equal to 7.2 आंसर. और वी कैन से, और हम ये भी कह सकते हैं इसका रिवर्स ऑर्डर में हमें पता है कि इसका मीनिंग ये हुआ कि that when 7.2 is multiplied by 7.2 that is 51.84. So the answer is 7.2. Find the square root of 42.25. Same way, same process. You write here. देखिए यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे, you write this number here. इस नंबर को आप यहाँ लिखिएगा. That is 2.25. इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल के लेफ्ट वाला पार्ट है उसका पेयर बनाइए, बार का साइन लिखिए. डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है यहाँ से बार का साइन लिखिए. एंड नाउ यू कंसीडर द इंटीग्रल पार्ट हियर. जो इंटीग्रल पार्ट है देखिए ये वाला, ऐसा नंबर दीजिए जिसका स्क्वायर आइदर 42 और लेस देन 42. वी नो दैट इज 6 जा, that number is 6 जा 6 into 6 that is 36. 7 into 7 that is 49. 49 is greater than 42, so we have to take here 6. So write here 6.
then you also write here 6, and 6 6 are 36. Subtract means 42 minus 36, that is 6, and this 25 as it is. Now you don't put here sign of decimal. यहाँ पे आपको डेसिमल का साइन नहीं पुट करना है, और जो नाउ यू नो दिस नंबर 6 और इसका जो डबल नंबर है आपको यहाँ पुट करना है. डबल ऑफ 6 इज 12. सो यू पुट हियर मीन्स 12. यहाँ पे 12 पुट किया. अब देखिए कौन सा नंबर आपको यहाँ लेना है जिसके मल्टीप्लाई करें. दैट नंबर इज 625. यहाँ पे जैसे ही कोई नंबर लिखेंगे यहाँ पहले से ही आपको डेसिमल पुट कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो 25 है ये हमारा डेसिमल पार्ट है. आपको ये क्वेश्चन गेस करना पड़ेगा कि हम क्या नंबर लें. देखिए दिस नंबर इज 12. सो वी नो दिस लाइन लेफ्ट हैंड साइड इज 5, सो मल्टीप्लाई बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5. यहाँ भी आप 5 लिखिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 125 इंटू 5 दैट इज 625. सब्ट्रैक्ट करिए, कैंसिल हो जाएगा 0, एंड यू ऑल्सो राइट हियर 5. So square root of 42.25 is equal to 6.5. Answer. होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा. आई एम टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस. कीप वॉचिंग. Find square root of 31.36. This is decimal number. तो देखिए what to do. Same process, same method. We write here the number 31.36. लेफ्ट हैंड साइड से डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड से पेयर बनाइए, और डेसिमल पार्ट का भी डेसिमल से पेयर बनाते चाहिए. चलिए अब ये जो नंबर है डेसिमल से प्रीवियस इंटीग्रल पार्ट हमारे पास है. दिस नंबर इज 31. ऐसा नंबर देखिए जिसका स्क्वायर आइदर इट इज 31 और लेस देन 31. वी नो दैट नंबर इज 5, because 5 into 5 is 25. 6 into 6 is 36. This 36 is greater than 31, so I have to write here 5. Same number you have to write here 5. 5 5 are 25 you have to write here, and now subtract. 31 minus 25, that is 6, and this 36 as it is. Double of 5 is 10, so you write here 10 here. Now we have to take one number here, by which if we multiply we should get 636. क्या आपके पास कोई नंबर है? देखिए you have to write here this number. You can write here 6. You write here 6 by observation. Multiply भी इसी नंबर से करना पड़ेगा, and 106 into 6, that is 636. So you write here 636. Subtract 0 here. यहाँ हमारे पास आया 6. लेकिन देखिए you keep one thing in mind that this number is having decimal values here. तो यहाँ पे जो भी आप आंसर लिखे उसके पहले means here you have to write decimal. So the square root of 31.36 is equal to 5.6. Answer. Find the list number which for the following numbers so as to get a perfect square. इस 402 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि द नंबर रिमाइंडर इज द परफेक्ट स्क्वायर. सो देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसका पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. देखिए दिस नंबर इज
ये नंबर है 402। राइट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं। देखिए, वो जो नंबर जो डेसिमल में नहीं है उसका राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड, देन 02 is one pair, then left hand side is only 0. You can write 4, you can write here 0. So now search a number, give a number whose square is either 2 or less than 2. We know this number is 2, because 2 square is 2 into 2, that is 4. So you write here 2, 2 twos are 4, and you write here 2 also. Subtract करें, देखिए, that is 0, and when you copy this, that is 0 2. अब इसके अंदर that number is 02. अब क्या करें? What is the number here? यहाँ पे देखिए, ये 02 आपके सामने बच गया है यहाँ पे। सो द नंबर इज, इसका डबल आप करेंगे। देखिए, दिस नंबर इज 2। इसका डबल मैं पहले का डबल ऑफ दिस नंबर शुड बी रिटर्न ओवर हियर। इसका जो डबल है वो हो जाएगा 4। सो यू राइट हियर 4। अब 4 के आगे हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या नंबर यूज करना चाहिए कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करें? तो आइदर इट इज इक्वल टू 2 और लेस देन 2। देखिए, 4 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज 41, लेकिन ये तो 2 ही नंबर ज्यादा हो जाता है। यू कैन नॉट टेक दिस नंबर। सो इफ आई राइट हियर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज 0 0, yes. So what you do, you write here 0 multiply by 0, so you put here also 0, and that is 0 0, sorry 0, subtract करें, that is again 2। अब देखिए, जो नंबर होगा 20 के बाद डेसिमल पार्ट लेना पड़ेगा, ये हमारे पास रिमाइंडर है। अगर मैं इस 2 को, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज दिस, इस 2 को मैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन द नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। सो कैन वी सब्ट्रैक्ट 402 में से सब्ट्रैक्ट करिए 2, एंड दैट नंबर इज 400, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। सो we can say that we should subtract 2 from 402 to get a perfect square number। तो अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा? देखिए, सो सीधे साइड, so this number is 400, and square root of 400 is 20। So टू आंसर्स यहाँ पे हुए कि जो रिमाइंडर, जो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट 20 है, और क्या सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए? वी शुड सब्ट्रैक्ट 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। हमने ये किया है कि जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको हमेशा ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सी टू इट। जितने भी क्वेश्चंस में है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, देन रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कीप इन माइंड, राइट? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। What should be subtracted from 1989 to make it a perfect square? क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए? उसके लिए फिर से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। देखिए, ये नंबर है, दिस नंबर इज 1989। पेयर बनाइए राइट हैंड साइड से, 89 1 पेयर, 19 1 पेयर,
Now we have to take one number whose square is either 19 or less than 19. ये देखिए यहाँ पे आप 4 लिखिए, 4 into 4 that is 16. So write here 16 and write here 4. You subtract 19 minus 16, that is 3, and 89 as it is. Double of 4 you write here, that is 8. और यहाँ पे क्या नंबर लिखें कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 389 आए. सो आपने देखा होगा कि what number should be that number? That number should be, and I think if I'm writing here 4 multiplying a 4, 84 into 4 is equal to 336. Subtract करिएगा. Then when we subtract, that is 53. So here remainder is 53. So and write here your 4 also. It means ये जो number है 44 square आना चाहिए. Therefore, so we should subtract 53 from 1989 to get a perfect square. So देखिए 1989 minus 53, that will be 1936, and square root of 1936 is equal to what? That will be 44 आंसर. दो क्वेश्चन है इसमें कि क्या सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए. हमारा आंसर है कि हम इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 53 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बचेगा, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विल बी 44. What should be subtracted from 3250 to make it a perfect square? क्या नंबर्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करें ये परफेक्ट स्क्वायर आए. देखिए हम यहाँ पे वी आर टेकिंग परफेक्ट स्क्वायर हियर. कैसे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए. देन इट इज 3250. दिस इज 3250. राइट हैंड साइड से पेयर बनाइए, दैट इज 3250. नाउ वी हैव टू टेक 32. ये जो फर्स्ट पेयर है देखते हैं. एक नंबर सर्च करिए जिसका स्क्वायर 32 या 32 से कम आए. दैट नंबर इज 5 बिकॉज 5 into 5 is 25. You write here 5. Subtract करिए. On subtracting 32 minus 25, that is 7. This 50 as it is. Double of this 5 is 10. You write here 10. अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर लिखे जिससे मल्टीप्लाई करें. So the number is either 750 or less than 750. We can write here 7 multiply by 7. That is 107 into 7. That is 749. Subtract करिए and the remainder is 1. Here remainder is 1. So therefore you can write the answer statement. Therefore we should subtract 1 from 3250 to get a perfect square number. So 3250 minus 1, that is 3249, and square root of 3249
will be, that will be 57 आंसर। दो आंसर हमारे पास हुए। एक तो ये क्वेश्चन था कि क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, हमने कहा 1 सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो द रिमाइंडर का क्या, परफेक्ट स्क्वायर का क्या होगा, वो होगा 3249, और इसका जो दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ 57। So that's all for this part 3. Next part on your screen. What should be subtracted from 825 to make it a perfect square? देखिए आप यहाँ पे लिखिए 8, सॉरी, आपने 8 लिखा, और सेम मेथड हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सो यू राइट हियर 825, राइट हैंड साइड से इधर से हमें पेयर बनाना है, एंड दैट इज what is left, only left hand side only 8 is left, or you can write here 08. So take this 08 और ऐसे नंबर आप सर्च करिए जिसका जो स्क्वायर है वो either it should be means 8 और less than 8। कोई नंबर आपके दिमाग में आया? यस, 3 3 9 ज्यादा हो गया। So you have to take 2 into 2, that is 4. So write here 2, then write here 2, then that is 4. Subtract करिए 8 minus 4, that is 4, and this 25 as it is. Double of this 4 is 2 is 4, so write here 4. अब यहाँ पे मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, किस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, कि जो नंबर है वो आइदर इट इज 425 और लेस देन 425। देखिए, you put here 8 multiply by 8, 48 into 8, that is 384। subtract करिए, the remainder is 41, so remainder is 41, and we know remainder should be subtracted, therefore 41 should be from 825, और 825 में से हम 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो what will be the it will be 784, and square root of 784 is 28। तो क्वेश्चन ये है कि इसमें से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, कितना सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। वी शुड सब्ट्रैक्ट 41, that is the answer, and the square root of the remainder is 784, and its square root is 21, so 21 is the answer, and this 41 is also the answer. Next part on your screen, what should be subtracted from 4000 to make it a perfect square? इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, that is 4 1 0 2 0 3 0, राइट हैंड साइड से पेयर बनाइए, and this is 40। सर्च ए नंबर, ऐसा नंबर देख सर्च करिए जिसका स्क्वायर 40 हो या 40 से कम हो। वी नो 6 6 36, तो यहाँ पे आप 6 लिखिए, यहाँ भी आप 6 लिखिए, एंड 6 6 36, सब्ट्रैक्ट करिए 40 minus 36, that is 4, and these 2 0 as it is।
डबल ऑफ 6 इज 12 आप यहां लिखिए, और यहां पे हमें वो नंबर लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करने से आइदर इट इज 400 और लेस देन 400। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 369। सब्ट्रैक्ट करें एंड दैट इज 31। यू राइट ऑल्सो हियर 63। वो जो नंबर होना चाहिए वो स्क्वायर ऑफ 63 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 31 रिमाइंडर है, देयर फोर 31 should be subtracted from 4000 to get a perfect स्क्वायर नंबर, लीस्ट नंबर। ये क्वेश्चन है लिस्ट नंबर्स। सो वन आंसर इज दिस। अगर इसमें से मैं 4000 में से 31 में सब्ट्रैक्ट करूंगा, then this will be 3969। and what is square root of their end? The square root of 3961 is equal to 63. So this is answer. So here are two answers. पहला ये आंसर था कि क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, हमने कहा कि आप 31 सब्ट्रैक्ट करिए। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 31 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? दैट विल बी स्क्वायर ऑफ 63। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।